So good morning, everybody. Welcome to Inner Circle. All of us know each other. Yet let me invite Naveen to please introduce himself because he's come for the very first time. And then we'll continue with the proceedings for the Inner Circle. Good morning, Naveen friends. please. Yeah, Good please. morning, friends. I'm Naveen Kumar. I'm an IT professional. I have recently started my startup, DigiFlash Solutions, with the help of Atul sir. I've gone through with Ubuntu and then I got the idea how I can start it. So, and I'm also in the process of learning so that how I can expand and how can I grow my business. Thank you. Yeah. So Naveen please share your number in the chat box, and everybody else who would like to reach out to you, they'll do reach out to you. All right. And we've got Mr. Mithilesh Jha with us, Mr. Satya Gupta, Mr. Manish, CA Manish Kumar, Mr. Rajesh Buddhiraja, Mr. Ravendra K. Mishra, and Mrs. Sucheta Acharya, and myself, Atul Puri. All right. Inner Circle is a platform to really look at the challenges that we businesses face. So we've been looking at various innovative models such that it can become more effective, right? So two things that we have been doing in the Inner Circle is, one is we have a create session, okay, wherein one person comes up front, shares his challenge, and we'll do that today as well. Second piece is we work on some little bit of either knowledge sharing or some kind of training which the people can take back home for the day. And then we have some time for open discussion. This is primarily how the session would go. So, and today, this is the week of entrepreneurs. Satyaji, what day was the Entrepreneurship Day? I think it was last Saturday. 21st. Yes. So 21st of August is the International Entrepreneurs Day. We were planning to have today as the Entrepreneurs Day, and that is what we will go ahead with. So what we will do is we will invite all of us to spend around 5 to 7 minutes and share about our entrepreneurial journey. How did the entrepreneurial bug bite us? What did we create out of it? And what are we willing to contribute to others? Fair enough? How did the entrepreneurial bug bite us? What did we create out of it? And what am I willing to contribute to others? So, so let us start with Satyaji. Satyaji is the chairman of the Inner Circle as of now. He has given a great philosophy which is called not working. So let us hear from him. Satyaji. Oh, thank you, Atulji, and let me wish all of you a happy entrepreneurship week. Because what I have done is that before I go for my bug biting of entrepreneurship, that any day actually which is symbolic can be celebrated as a week also, just to have the flexibility or the means so that you are never late. And it is always as told that it is good to be late, but not to be there. So my entrepreneurship journey started actually about 8 years back when I was traveling from Fiji to Delhi, and it was an 18 hours flight. And as you know, every airport I board a flight, I buy a new book. So my each tour helps me to buy 2 books, actually, one going, and my endeavor is to finish that book in the flight itself, so that when I come back, I put it in my desktop, but I don't have to spend time in reading that, actually. So that is it. So on the Fiji airport, actually, when I was searching for a book, there was a book
on behind that it was written, don't buy this book if you don't want to change your life. So without reading the title and the author, I bought that book. Just I took that as a challenge actually. So when I bought that book and I was waiting to board the flight, I saw the title of the book. The title of the book was 4 Hours Work Week, 4HWW, written by Tim Ferriss. And I got more interested in that. And when I had written the abstract, it was mentioned that whatever you are doing by spending 40 hours a week, you can achieve the same productivity in the money term, in the satisfaction, in the KRA, just by working 4 hours. So it was 4 hours versus 40 hours. So you have to be a fool not to read that book, actually. So I started reading, and there was a break in the Hong Kong airport. And during that, I made up my mind because I had finished almost half of the book. And in that it was mentioned, if you want to do all these things, first step you have to take is fire your boss. If you have a boss, you can never achieve the efficiency what the book predicted, 4-hour work week. Because if you want to be super efficient, you have to be your own boss. That means you should not have a boss. So immediately I decided, and I was working at a very senior level in a corporate, and I was to give these self-appraisal. So there were marks to be allotted to, and immediately I gave 0, 0. There were 10 columns. In each, I give 0, 0 to myself and send it to my boss. My boss immediately called me. Hey, Gupta ji, what has happened? Why you have given 0 marks to you? He told, Saab, I have not achieved anything for working for you. Kehte, nahi, you had no KRA first of all, and I have never asked you. And I told Saab, you have not asked me, but I am feeling very guilty. I have achieved 0 while working with you. कहते नहीं, I don't agree for that. And you know, गवर्नमेंट में क्योंकि आपको गवर्नमेंट से काम कराना था, और गवर्नमेंट में तो काम इतनी आसानी से होता नहीं है, और you should have a patience. I told no, I have lost my patience. So he asked me, what do you want to do? I told Saab, I want to quit. कहते no, आपको पैसे कम पड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं साहब, पैसे ज्यादा पड़ रहे हैं. आई एम फीलिंग गिल्टी कि फॉर डूइंग नथिंग आई एम चार्जिंग सो मच हाई सैलरी. सो ही टोल्ड, अब करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब मैं कुछ और करना चाहता हूँ. कहते यार यहाँ भी हमने आपको फुल फ्रीडम दे रखी है, कभी पूछते ही नहीं आप कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, कुछ करते हो या नहीं, और आप खुद कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, तो और इससे बड़ी आप क्या करोगे? मैंने कहा नहीं साहब, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. तो माय बॉस टोल्ड मी, एंड आई नॉट डिस्क्लोज एट दिस स्टेज नेम ऑफ दैट बॉस बिकॉज ही इज समथिंग वेरी बिग. सो ही टोल्ड, गुप्ता जी, you want to leave me, you leave, but I am not leaving you. So you are free bird, but not from my side. Of your own, you are free bird, do whatever you want to do. And that was how I got in the entrepreneurship. And my main objective of that entrepreneurship was, one, to increase my efficiency, that कि जो काम पूरा 9 to 5 days करके होता है, वो अगर 4 घंटे में हो जाए हफ्ते में, तो why not? तो दैट वाज मेन ऑब्जेक्टिव. बट उसके पीछे एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था जो मैं आज तक भी मेरा पैशन है, कि क्रिएशन जॉब. बिकॉज जब हम रेलवे में भर्ती हुए, और तो रेलवे में माय मदर एक्चुअली वी वर इन ए विलेज, तो माय ब्रदर टोल्ड माय मदर कि ये भाई सत्यन भाई तो बहुत बड़ा अफसर बन गया. तो मेरी मदर ने पूछा, भाई ये कह रहा था तुम बड़े अफसर बन गए हो, क्या बन गए हो? रेलवाई में चले गए. उसको रेलवे को रेलवाई कहते थे गांव में. कहते, मैंने कहा हाँ, मैं ये बन गया. कहते यार
भाई ये बता तू स्टेशन मास्टर कब बन जाएगा। Those are the thinking। अच्छा फिर when I came to रेलवे, गांव वाले आए कहीं भाई इसको लगा दे यार, इसको लगा दे, उसको कहते थे चिपका दे, कहते यार इस चौरे को भी चिपका दे, इस चौरे को भी चिपका दे। तो रेलवे में तो मैं चिपका देता था, मतलब जॉब दे देता था। फिर मैंने रेलवे छोड़ा, ज्वाइन लाई, तो किसी को जॉब ही नहीं दे पा रहे थे, जॉब पे बैन लग गए सरकार ने। फिर प्राइवेट में भी आया तो किसी को जॉब नहीं दे पाया। तो और गांव वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई कि साहब इतने बड़े बड़े अफसर बन रहा है, ये बन रहा है, और जॉब ही नहीं दे पा रहा। तो आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी। देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी मैं करूंगा तो जॉब क्रिएशन पे करूंगा काम। एंड दैट इज व्हाई माय डिजी गांव जॉब फैक्ट्री इज देयर, माय सैम कंसल्टिंग इज देयर। तो ये दोनों का मेन मेरा पर्पज है कि लोगों को रोजगार मिले, जॉब दें, जॉब क्रिएट करें। So that was the starting point of my entrepreneurship journey. और अभी what I can contribute is I can contribute to help in the entrepreneurship by changing its definition to intrapreneurship. इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपको दो चीजें होनी चाहिए, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए और कुछ पैसा होना चाहिए। आप बिजनेस, कुछ पैसा तो चाहिए। तो लेकिन आपके 99% अपने बंदे ऐसे हैं जिन पे रिस्क लेना चाहते हैं, पैसा नहीं है, जिन पे पैसा है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। दोनों चीज सिर्फ 1% लोगों पे है इंडिया में, दोनों चीज। तो हमने फिर मैंने ये इंट्राप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट डेवलप किया कि जिस पे सिर्फ पैसा है, आई विल हेल्प हिम टू टेक रिस्क, और जो रिस्क लेना चाहता है आई विल टेल हिम और कि पैसा कहां से आएगा। तो दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए। सो उस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को आई कैन हेल्प, आई एम एनकरेजिंग। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एक्चुअली अबाउट 1000 जॉब्स टोटल अंडर दिस मॉडल। तो हम कहते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता, हम कहेंगे यार ठीक है तुझे मैं मिनिमम सैलरी दे दूंगा। नॉर्मली एंटरप्रेन्योर बनने के बाद सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ प्रॉफिट या डिविडेंड जो भी मिलता है। तो हम कहेंगे यार ठीक है तुम्हें मिनिमम दे दूंगा। क्योंकि जब मैं भी ये छोड़ रहा था, मैं वो भी बताना जरूरी है, जब मैं छोड़ रहा था मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि मैं रिजाइन कर दिया। मैंने 3 बार रिजाइन किया, तीनों बार वाइफ को बताया नहीं था, उनको बाद में पता लगता था। कई बार तो 3 साल बाद पता लगता था कि इन पे तो जॉब ही नहीं है, या ये तो ये कर रहे। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो 5 साल बाद मेरी वाइफ को पता लगा कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। क्योंकि जब बेटे का सीवी लिख रहे थे और वो लड़की वाले आए तो उन्होंने, उनको मैंने कहा कि मेरा ये अपना बिजनेस है। तो वाइफ मेरी तरफ देख रही कि तुम्हारा कहाँ से बिजनेस आ गया, तुम तो सर्विस करते थे। ये 5 साल की बात है। तो उनका ये था भाई तुम जो मर्जी करो, जो जॉब छोड़ो, जो मर्जी करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, व्हाट इज योर सीटीसी। आई एम इंटरेस्टेड कि घर में जितना आ रहा है, जब तुम सरकार में थे इतना घर में आ रहा था, उससे ज्यादा आ रहा हो तो प्राइवेट में चले जाओ। अपना बिजनेस शुरू किया, जो मुझे तुम देते थे घर में जितना आ रहा था उतना मिलना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मर्जी हो जाए। तो वो वही होता है कि फियर होता है और रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। तो जो भी बंदे ऐसे आते हैं हमारे पास, भी ठीक है यार तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम्हारे को कितना चाहिए, 5000 में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तो 5000 आई कमिट टू यू एवरी मंथ, चाहे बिजनेस से इनकम हो या ना हो। सो दैट इज व्हाट इज माय ऑफर टू एनीबॉडी। आइदर ही शुड हैव मनी or he should have risk taking capability, nothing else is required, and then I can help. But this is only for small business people, individual, that is also called solopreneur, जो अकेला बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता है। दोनों चीज ना हो, एक चीज जरूर हो, then I can help. So that is my offer to our members and all the networks connected to us. Thank you, Atul ji. थैंक यू। ये आपने पीछे ये लिख रखा है स्पिन 2021, उसके आगे @समथिंग, ये क्या है? ये सब कल एक सेमिनार में मैं बोल रहा था, सिग्नल प्रोसेसिंग and integrated networks. So I was invited by MIT University. I spoke from here only.
तो उस पे मैंने अपना बताया था कि इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो जाए। दैट वाज ए लेक्चर बाय मी, बट इट वाज यस्टरडे। आज एक दूसरा है, वो मैं चेंज करूंगा अभी 10 बजे। टुडे आई एम स्पीकिंग, और ओटीएन है एक ऑप्टिकल नेटवर्क, एक नए नेटवर्क आ रहे हैं जो 11 से 1 बजे मैं उस पे बोल रहा हूँ, जो 5G में काम आएंगे। Fantastic. All right. करीब 1 मिनट है. Anybody wants to ask a question? In fact, this is one of the best speech I have listened. Question. क्यों बिजनेस शुरू करा और क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या गोल होने चाहिए। बहुत ही शानदार सत्या सर। ये मैं कोशिश करूंगा कि फेसबुक में अगर कहीं आ गया क्लिप तो मैं इसको रखूंगा उन लोगों को बताने के लिए कि भाई बिजनेस अगर करना है तो ये 5 मिनट सुनो या 4 मिनट सुनो। Oh, thank you, मिथिलेश जी. Yes, actually that is what, and especially हम रूरल में जैसे वीमेन, हमारा उद्यमी बहू वाला कंसेप्ट है। अब गवर्नमेंट ने भी एक नया कंसेप्ट माइटी ने निकाला है, उसी उद्यमी वर्ड उन्होंने भी यूज किया है, उसको समर्थ है वैसे, बट उसके लोगों में उद्यमी है, जो मैंने यूज किया था उद्यमी बहू डॉटर इन लॉ वाला, वो भी है। थैंक यू। Great है जी. Yeah. नवीन, आपके पास कोई क्वेश्चन था? सर अभी आपने बताया कि you help the solopreneurs also in the two way. One is if they have a risk appetite, and second thing, if they do not have a risk appetite and they want to some survival income. So could you please explain that more? या एक्चुअली नवीन जी, इसका मतलब ये था कि किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, चाहे वो सोलो हो या कुछ हो, 2 चीजें चाहिए होती हैं नॉर्मली। One is risk appetite, that is the definition of entrepreneurship, and second some seed capital, जिसको हम bootstrapping कहते हैं, चाहे वो बहुत कम हो, चाहे 1000 हो 2000 हो। अब ये दोनों चीज एज आई टोल्ड यू अपने कंट्री में सिर्फ 1% लोगों पे है, जबकि सिर्फ 1% लोग ही इसका मतलब इस डेफिनेशन में बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर। बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ईच वन एक्चुअली अल्टीमेटली। अभी तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हर एक को जॉब गिवर की, जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनाना है। कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है, तो वो फिर 1% से तो ये काम नहीं होगा। तो आई फाउंड ए वाया मीडिया दैट इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप. Intrapreneurship is just to help you to become entrepreneurship without taking a risk. You don't take a risk in the intrapreneurship. तो वो रिस्क जो नहीं लेता, और रिस्क क्या लेता, रिस्क होता है कि मेरी कैपिटल जो है वो ना डूब जाए और मुझे आमदनी ना हो, जो मुझे आमदनी कम से कम चाहिए ना। जैसे हमारी वाइफ का मैंने एग्जांपल दिया कि उनको तो जो घर में आता है वो तो चाहिए ही चाहिए ना, तो हर एक बंदे को ही वो चाहिए एक्चुअली। अब एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए और आपकी आमदनी नहीं हुई तो रोजी रोटी का ही सवाल हो गया ना। तो उसको हटाने के लिए आई हैव डिवाइस्ड ए मेथड कि वी विल गारंटी ए मिनिमम सर्वाइवल रिटर्न टू यू बाय यूजिंग माय फार्मूला। तो वो वाला इसमें है। चलो ग्रेट है जी. एनीबडी एल्स? नहीं तो मूव करें नेक्स्ट पर. Fantastic. So since all of us are entrepreneurs, who's the next one? सत्य, मिथिलेश जी चलिए बताएं प्लीज. सो मैंने जब जॉब छोड़ा था 2011 में, तो मेरे 10 भी साल हो गए रीजन, आपको? हाँ 10 साल डेट हो क्या थी? गए। डेट याद नहीं है अब। महीना? नवंबर 2011। अरे गजब. तो अभी 10 साल होने वाले हैं. 5 नवंबर 2011। 5 नवंबर. तो फैंटास्टिक. तो सेलिब्रेशन होगा आपकी बार. श्योर सर, आपने याद दिलाया तो सेलिब्रेट भी दशक, कर लिया जाएगा। तो 1 दशक आजादी का. इनफैक्ट उसके पीछे भी रीजन जो है बिल्कुल वैसे ही थे जो सत्या जी के थे, और मैक्सिमम चीजें वही थी, वही जो माइंडसेट था कि आप अपना तो कुछ न कुछ अगर आप कैपेबल हैं अपनी जिंदगी तो चला ही लेते हैं, और जिस समय लगता है कि कुछ करा जाए किसी समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी, तो उसमें आप नौकरी करते हुए एक हद से ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके दिमाग में होता है कि हमको कुछ करना है तो मेरे पीछे बहुत दिनों से चल रहा था। जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था 2007-8 में मैंने वो बुक पढ़ा था, तब से ही दिमाग में आ गया था कि अब नौकरी तो छोड़ना है, और हम
4-5 साल तक ये मौका ढूंढते रहे कि कैसे जो है ना उसको छोड़ा जाए। तो मैं टाटा में काम करता था, और टाटा की नौकरी मैंने जानबूझ के छोड़ दी कि मुझे अब सीखना है बिजनेस कैसे करना है। 2 छोटी कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया जस्ट टू लर्न की कंपनियां चलाने के लिए क्या जरूरत। टाटा में रह के इतना आसान नहीं है सीखना कि कंपनी चलाना, वहां पर आप किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में ही काम कर पाएंगे, और उस डिपार्टमेंट के भी एक छोटे से हिस्से में ही आप जा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उस डिपार्टमेंट के टॉप पे जाएंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ना बहुत संभावना घट जाती। तो मैंने जानबूझ के से 2 छोटी कंपनियों में जॉब करा, और उसके बाद फिर जाके अपनी कंपनी खोल ली। और ये है कि कम से कम इसी तरीके से 25 डिफरेंट लोगों को जॉब से बिजनेस में तो ले आए, और उनमें से लगभग सारे एक लेवल पे सक्सेसफुल हैं अब भी। ऑल्दो मैं उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था, जो हम प्लान करके आए थे उतनी नहीं रही। लेकिन 25 से ज्यादा आदमी होंगे जिन्होंने कि मेरे कारण नौकरी छोड़ी। और जॉब क्रिएशन आज भी मेरा जो है कि कम से कम 10,000 लोगों को अगर जॉब क्रिएट कर पाए, तो वो मेरी लास्ट जब खत्म हो सारा चीज, तो उस वक्त सेटिस्फेक्शन आएगा, हाँ ठीक है। और उसका रीजन भी वही था जो सत्या जी बोलते हैं। हमारे इलाके में, बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों के पास, गरीब लोगों के पास रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होता है, वो परेशान रहते हैं। अगर वो कह रहे लिमिटेड टेंडर करते हैं, आपने उनको अगर किसी तरह से जॉब दे दिया, तो उनके घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है, बाकी चीजें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। एक भी चीज कर दिया। तो ये मेरा भी मिशन है। ऑल्दो अभी जितनी सक्सेसफुल हुए हैं, आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द प्राइम मिशन है मेरे बिजनेस में आने का। एंटरप्रेन्योरशिप की जो परिभाषा सत्या जी ने बताया, वो मेरी भी है कि आप जो है ना ज्यादातर, एक तो मेरे दिमाग में है ना, हर वो आदमी जो ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, अंदर से जिसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है ना, वो भी बिजनेस को देखता है। सब कैपेबल बहुत है, लेकिन जिंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहता है। तो मैं उस किस्म का आदमी हूँ जो जिंदगी भर बहुत हार्ड मेहनत करने में मेरा विश्वास नहीं है। तो जो लगता है कि चीजों को चेंज कर सकता है, वो लंबे समय तक नौकरी नहीं कर सकता। दिमाग में हमेशा आते रहेगा कि बिजनेस खड़ा करो, सिचुएशन बनाओ ऐसी जिसमें कि जो है ना लोग काम करें और आप आराम करें। अब ये एक अजीब सी चीज है साथ में, और ये मेरे दिमाग में ऑलवेज है। थैंक यू। फैंटास्टिक। तो सत्या जी, आपका क्वेश्चन। या थैंक यू मिथिलेश जी, एक्चुअली आपने भी बहुत अच्छी बातें बताई, और आपने जो कहा कि आपके जो आपने जो क्रिएट किए वो सक्सेसफुल हो गए और आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो गए। इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गुरु गुड़ चेला शक्कर, तो चेला हमेशा आपसे आगे निकलेगा, वो तो पक्का है, वो तो आप बांध के रखो, मतलब वो, बट दैट इज योर सक्सेस आल्सो। और उसके अलावा आपकी सक्सेस सिर्फ आपके बिजनेस बढ़ाने में नहीं थी, आपकी सक्सेस है आपने कितनों को और बिजनेस कराया, तो उस इस हिसाब से यू आर मोर सक्सेसफुल। और जो आपने ये कहा भाई मेहनत कम करनी है और ले दे के नौकरी, उसका फर्स्ट है कि नौकरी करनी ही नहीं है, अगर, बिकॉज नौकरी का मतलब है मेहनत। और मेहनत कब होती है? जब आप किसी और के लिए काम करते हो। जब आप अपने लिए काम कर रहे हो वो तो मेहनत होती नहीं, उसको मैं तो हॉबी मानता हूँ या पैशन मानता हूँ, लोग उसको पैशन कहते हैं, मैं उसको हॉबी या पास टाइम मानता हूँ। जो मैं अपनी मर्जी से जो भी काम करता हूँ, दैट इज वाई टिम फेरिस भी यही कहते हैं कि भाई आप अपने बॉस बनो पहले, ताकि कोई ये पूछने वाला ना हो भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, 9 बजे क्यों नहीं आए, 8 बजे क्यों नहीं आए, वो सारा खत्म हो गया। तो और उसके बाद जो भी आप करोगे वो मेहनत में तो आता ही नहीं है, आप सारा दिन सोते थोड़ा रहोगे, मतलब। तो इसलिए ये, और इसको वैसे फाइनेंशियल फ्रीडम भी बोला जाता है, जो बिल्कुल आप फिट हो उसके लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि जो भी आप करो, जैसे मेरे भी 4 स्टार्टअप हैं, सो आई एम ट्राइंग टू पुट देम इन ऑटो मोड, ऑलमोस्ट ऑल आर इन ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब है कि वो मेरी डेफिनेशन ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब है कि आप हो या ना हो, आप ना हो तो वो काम बढ़िया होना चाहिए, एक्चुअली आप इंटरफियर ना करो, काम उस बढ़िया हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चेयरमैन। और वही आप करना चाहते हो बेसिकली, कि मेहनत मतलब काम करना ही नहीं है आपको, वो भी आप भी मेरी डेफिनेशन में आने वाले हो फिर, नोट वर्किंग वाली में, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
बहुत Awesome. शानदार सर, बहुत शानदार जो क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी आगे की भाई। All right. आप आराम नहीं कर रहे हो, हॉबी आप जो है वो फॉलो कर रहे हो, बहुत शानदार। Any more questions that we have for Mithilesh ji? आप ये समझे कि जी आप अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so if you're asking a question, you are contributing to the speaker. My question Naveen. पूछूं आपसे? हाँ जी, please Because पूछिए, because you gone through the process of employee to entrepreneur. So how was your journey from how you crossed that transition phase? Because I am also in that transition phase. So how you can guide me? Because how do you manage that transition phase? सो मैं बताऊं सर, जो सत्या जी ने बोला ना, एक माइंड प्रोसेस मैंने उस समय था कि जब हम टाटा में नौकरी करते थे तो मैंने एक चीज सोचा है कि अगर खुदा ने खास्ते मैं नौकरी छोड़ देता हूं और मैं अपना बिजनेस करता हूं, 2 साल बाद अगर फेल कर गए, वापस नौकरी में आऊंगा तो कितने रुपए की नौकरी करूंगा। बड़ा बेसिक कैलकुलेशन मैंने दिमाग में किया था कि जैसे मान लिया जाए कि आप 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि 50,000 रुपए की तो नौकरी मिल जाएगी 2 साल बाद अगर मैं पूरी तरह से फेल हो गया। 50,000 भी अगर मिल गया तो मेरा घर तो चल जाएगा। 2010 में 50,000 रुपया ठीक ठाक होता था और घर चलने के लिए ठीक था। तो ये कैलकुलेशन मेरे हाथ में था। और जो मेरी अपनी जर्नी थी ना, 5-7 साल के टाटा की नौकरी में 4 प्रमोशन मुझे मिले थे। तो मैं इतनी फास्ट प्रमोट करता था खुद को, मुझे पता था अगर मैं 50,000 पे भी ज्वाइन कर लूंगा कभी तो वापस बड़ी जल्दी मैं आ जाऊंगा जहां पर मैं हूँ। तो ये सेल्फ बिलीफ ने जो ना, इसने बिल्कुल भी उस चीज को ज्यादा टेंशन में नहीं आने दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने कैपेसिटी पे भरोसा है कि मैं जो आज कर रहा हूँ ना उसका आधा तो पालूंगा ना, या 1/4 तो पालूंगा ना, तो रिस्क सर उसी समय खत्म हो जाती है। लेकिन आप अगर कंपैरिजन उसको इस पे करेंगे कि मुझे आज 25% मिल रहा है, मुझे मिलता था 100, तो फिर आपका दिमाग ही नहीं है बिजनेसमैन वाला। बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो सत्या सर ने बोला ना, रिस्क रिस्क यही है। और क्या है सर? रिस्क यही है ज्यादा से ज्यादा कि जो आज सैलरी मिल रही है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम अपना किसी भी हालत में अपना घर चला सकते हैं तो रिस्क रही कहाँ। बिजनेस करने के लिए हर आदमी को इस किस्म के माइंड सेट से निकलना होता है, इस थॉट प्रोसेस से गुजरना होता है। और ये मेरे साथ था। तो इस चीज को मैंने बहुत आराम। दूसरा बात जो करा क्या कि ऑलमोस्ट 2-3 साल के घर खर्चे के लिए जो है ना, इतना इनकम जमा करके रख दिया था कि घर चल जाएगा 2 साल, जब हमने शुरू किया था। तो इस दो चीज ने जो है ना स्मूथ प्रोसेस कर दिया था, जो मेरे साथ हुआ था। और जिसको छोड़ना है ना, जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और जिसको छोड़ना है, ये दो चीज करने के बाद जो है ना, वो 2 साल तक में आपको हर हाल में पता चल जाता है सर आप में बिजनेस करने का है भी या नहीं है। Fantastic. चलिए, let's move on. Thank you, sir. Thank you for sharing your input. Yeah. देखो, एक फैक्टर होता है ना कि आप जब वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं तो आपको डर वही भी रहता है कि यार क्यों पंगा लेने जा रहे हो। That also, that thank you for giving the इस input, sir. क्वेश्चन का मेरे पास है कि इस पेंडेमिक ने ना, जिसने 20 साल 18 साल 15 साल नौकरी करा है ना, वो 4 लाख 5 लाख 3 लाख के सैलरी वाले थे ना, उन सबको जीरो बना दिया है। तो सर रिस्क तो यहाँ भी उतना ही है कि अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं समय रहते हुए, तो आप जिस दिन 3 लाख रुपए से जीरो पे आएंगे ना, तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे। क्यों ना, फिर कोई 3 लाख रुपए की नौकरी आपको नहीं देने वाला, बिकॉज आपने जिंदगी को कुछ दूसरा चीज सीखने के लिए लगाया ही नहीं। एंटरप्रेन्योर सिर्फ तो ये है कि आज ही सोचना शुरू कर दें कि मैं मिनिमम कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो मैं मार्केट से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, तो अगर जितना है उसका 50% तो कमा लूंगा। और अगर नहीं है तो रिस्क पे ऑलवेज है। और नवीन जी, जो आपने बोला एक्चुअली, जो मिथिलेश जी से पूछा, वो एक्चुअली क्या होता है कि योर एंटरप्रेन्योरशिप बग हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन दिस फियर ऑफ फेलियर बग। एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना, पंगा, मतलब पंगा तो है ये, बट पंगा लेने के लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए। जैसे मेरा ट्रिगर ये टिम फेरिस की बुक थी, इनका ट्रिगर रिच डैड पुअर डैड वाली थी। तो आपको भी इन दोनों में से एक किताब तो पढ़नी पड़ेगी, और ऐसी और भी बहुत किताबें हैं, बट मे बी रिच डैड, तो आपको पता लग जाएगा। यू हैव टू गेट ए ट्रिगर। एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट होता है वेयर योर रिस्क ऑफ फियर और फेलियर, फियर ऑफ फेलियर
gets diminished by your motivation for entrepreneurship actually. तो वो एक बहुत जरूरी है, फिर आप ये नहीं करोगे। और जैसे इन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, उसको जो ये मिथिलेश जी को पता है, जिसको आप इमरजेंसी फंड बोलते हो, तो इन्होंने तो 2 साल इमरजेंसी फंड था, तो इनके लिए तो कोई रिस्क था ही नहीं एक्चुअली, ही डिड नॉट टेक ए रिस्क। अगर इन्होंने इमरजेंसी फंड बना के जॉब छोड़ी, दैट वाज नो रिस्क एक्चुअली, एंड दैट इज द वे। ये आपको अपने सीए साहब बताएंगे, मनीष जी, ये उनके फार्मूलों में ये सब आता है। Great. Welcome Ajish and Dharmishta. So today we are having a different session wherein we are celebrating entrepreneurship. All right. So who's going to be the third speaker? Self nomination. मनीष आप भी बता दीजिए। Yeah, Manish. हाँ जी सर। तो जब मैंने 2006 में आई हैड क्वालिफाइड माय सीए डिग्री, तो आई हैव जॉइन्ड वन सीए फर्म। आई हैव सीन इन सीए फर्म की in any firm nobody is going to give the full training. That is the CA firm is called as a training center, but nobody is going to give the real training. Just कोई भी काम आया करो जी, but nobody is going to give the right direction how you have to do. So that time I had the thought कि if I will start practice in one day, तो मैं एक इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर करूं जहां पर लोगों को साल 2 साल 3 साल मेरे यहाँ काम करें, एंड आफ्टर दैट वो कहीं भी जाए तो एटलीस्ट ही कैन अर्न 30, 40, 50,000 पर मंथ जो भी। तो इसी विजन के साथ मैंने फिर 1 से 2 साल मैंने एक सीए फर्म में काम किया, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस टू गिव द रियल ट्रेनिंग एंड जॉब टू वेरियस पर्सन। वो मेरे साथ आज भी चल रहा है। तो व्हाट एवर द स्टूडेंट इज कमिंग फॉर ट्रेनिंग इन माय फर्म, और जो मेरे यहाँ काम करते हैं साल या 2 साल के बाद, इवन बीकॉम स्टूडेंट इज गेटिंग एटलीस्ट 20-25,000 पर मंथ। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं एक ऐसा पॉइंट हूँ जहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड मेरे यहाँ से ट्रेनिंग पाने के बाद दे गॉट द एक रिस्पेक्टेबल जॉब। So this was my motive to start my firm and to come into business. Awesome. Anything else? नहीं जी। So you are real extrapreneur. You are real extrapreneur in that definition. You are really what you call intrapreneur. Means you are creating a person independent in his life. Definitely, Yes. sir. As a parallel, it is in the this financial management area. That domain you are creating a real person, and that must be giving you maximum satisfaction. Yeah. And holding the youngsters, and then creating, and why people are just telling that government to give the job, government to give the job. Exactly that job you are doing, and exactly this is the way. Even is wonderful. Wonderful. And one more thing, अतुल जी, कि Yeah. जब मैंने I have recruited my first trainee, तो मैंने क्या बाकी किया? सब लोग भी ये सुन सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। नहीं उन्होंने कहा ना वन मोर थिंग अतुल जी, तो मैंने कहा बाकियों के लिए पता नहीं है कि नहीं। नहीं अच्छा ठीक है। तो when I have recruited my first trainee, so that particular time I had the one problem with the service tax department. Actually I have registered one SSC with the service tax registration, but there is some problem in the department. तो वो जो लड़का मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था, जस्ट आई हैव गिवन द एड्रेस ऑफ दैट सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और बोला तुम वहां पर जाओ और ये सर्विस, आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑनलाइन प्रोसेस। मैंने बोला ये करवा के तुम ले आओ, तेरी जॉब पक्की। वो लड़का गया, 2 दिन डिपार्टमेंट में दिमाग लगाया, फिर वहां से कॉल किया कि सर वो 2,000 रुपया मांग रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, तुम वहीं से एटीएम से पैसा निकालो, दो और सर्टिफिकेट लेके आ जा। वो लड़के ने ट्रांसफर किया, वो पैसा दिया और सर्टिफिकेट भी लेके आ गया। मैंने उसके बाद दे दिया। तो दैट इज द माय प्रोसेस कि मैं किसी भी ट्रेनिंग को जॉब कैसे देता हूँ। जनरली आई टेक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इंटरव्यू
उसके बाद मैं देता। ये नहीं कि भाई आपको अकाउंट्स आता नहीं आता, वो तो सिखा ही दूंगा मैं। अगर आपका प्रैक्टिकल एटीट्यूड नहीं है कि लोगों से जाके मिलना है या लोगों से कैसे डील करना है, तो आप नहीं सीख सकते हो। तो दैट इज माय व्यू टू रिक्रूट एनीवन। दिस इज द वन थिंग। Awesome. थैंक यू सर। Who's the next one? I think Satya ji has got something to tell on this, because Satya ji has got a wonderful idea. नहीं, थैंक यू मिश्रा जी एंड मिथिलेश जी। मैं बस जब आपने बोला कि जो आप देते हो ट्रेनिंग इनको और कुछ सिखाते नहीं, और दैट इज हाउ द पीपल डू एक्चुअली, दे आर नॉट कॉल्ड इवन ट्रेनिंग, दे आर कॉल्ड आर्टिकल क्लर्क्स। तो उनको क्लर्क बनना सिखाया जाता है आपके जो ट्रेनिंग में, सीए की ट्रेनिंग में। और क्लर्क मीन उसको मैं कहता हूँ डोंकीज वर्क। एक्चुअली आप लोग इनसे डोंकीज वर्क कराते हो, दिन रात लगी रहती हैं, क्योंकि काफी मेरी लड़कियां भतीजियां काफी आपके आर्टिकल क्लर्कशिप से निकली हैं और दिन रात लगी रहती हैं, ऑडिट रहता है। और मैंने कहा तुम करते क्या? कहते नहीं हम तो बस जो क्लर्क का काम करते हैं। क्लर्क, मैंने कहा ये तो सीए बनने जा रही थी। कहते हैं सीए भी ट्रेनिंग के टाइम क्लर्क ही होता है और उसका नाम भी आर्टिकल क्लर्क है। तो सीखते तो कुछ नहीं है, सीखते हैं बट आप जैसे बंदे के यहाँ ट्रेनिंग करेंगे तो आप उनको सिखाते हो, जैसे सीधा यू पुट देम इन द वाटर एक्चुअली, कि जाके भाई ये पेमेंट निकाल के लाओ या ये सर्टिफिकेट लेके आओ, एंड दैट इज द बेस्ट ट्रेनिंग एक्चुअली। और उसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं। मतलब क्लर्क तो सब कुछ बन जाते हैं आजकल, तो कंप्यूटर भी क्लर्क का काम कर देगा आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टैली हो गया, ऐसी चीजें हैं जो आप आपका आर्टिकल क्लर्क करता है वो सारा काम कंप्यूटर कर सकता है। मतलब दैट इज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये किसी से सर्टिफिकेट निकलवाना, खासकर सरकारी ऑफिसर से किसी से पेमेंट निकलवानी, ये दो चीजें हैं जो अगर आपके बच्चे ट्रेनिंग में सीख जाएं, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। और वो फिर खुद भी एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। मतलब उनको फिर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी अगर ये काम वो सीख जाए। Awesome. हाँ जी, who goes next? मिश्रा जी। अनुभव तो बहुत है और मैं भी एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं नौकरी करने के ही लिए पैदा हुआ था, मैं ये सोचता हूँ, और वर्षों से नौकरी करता रहा। जैसे सत्या जी ने रिस्क लिया, और हम दोनों अच्छे मित्र भी रहे अच्छे, उसके बावजूद भी इनमें रिस्क लेने की वो थी, मुझ में वो रिस्क लेने की वो क्षमता नहीं थी। लेकिन एक ऐसा संयोग आया, एक चीज बताएं, क्षमता नहीं थी या इच्छा नहीं थी? क्षमता नहीं थी, इच्छा। इस चीज को मैं समझता हूँ कि इच्छा तो हर व्यक्ति को होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना, ये तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि उसके कई वो होते हैं, मानसिकता होती है, उस मानसिकता के अंदर वो जकड़ा रहता है। तो मेरे साथ भी ये घटना हुई। करीब वर्षों तक सत्या जी आके अपना प्रवचन मेरे कमरे में दिया करते थे और लंच हम लोग साथ लिया करते थे कई वर्ष तक। मतलब ये क्रूशियल टाइम में, मेरे जीवन का क्रूशियल टाइम जब चल रहा। तो ये बताइए, लंच सत्या जी लाते थे या आप लाते थे? नहीं, वो लंच हम लोग का बड़ा ही मजाक, बड़ा ही, आप लोग, हमारे घर में से चूड़ा और चना आता था। लंच घर से आता था, घर से चूड़ा चना बन के मेरे यहाँ डब्बे में भर के रखा रहता था। और हम लोग जो है वो, इनको भी मैंने बिहारी बना दिया। मैं कहता भाई यही मिलेगा हमारे चैम्बर में, चाय जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये चूड़ा चना मेरे घर से आता था। क्योंकि हमारी श्रीमती जिसके अलावा कहती है कोई बाहर का चीज नहीं खाना है, कुछ नहीं, एकदम जो घर में आके फिर लौट के घर में आए, चाहे 12 बजे रात में आए, घर ही पर खाएंगे। तो ये चूड़ा चना मेरे डब्बे में, हमारे पियून को पता है, जैसे असिस्टेंट था ही हर जगह, तो आएगा वही इनको मिलता था। लेकिन हम लोग उसको बड़े मजे से हम लोग है, और वो बहुत बढ़िया, कम से कम ऑयल में ये फ्राइड रहता है, और चना तो बिना ऑयल के ही फ्राइड रहता है। तो बड़ी अच्छी जिंदगी कट रही थी। तो अब मेरा अंतिम वर्ष आ गया रिटायरमेंट का। तो आदमी, अब मैं यंग ही था और सरकार कह रही थी कि अब रिटायर कर जाइए। तो मैं सोच रहा था अब क्या करूं। तो अच्छे खासे, जिस पद पे था उस पे अच्छे खासे ऑफर हमको इंटरनली आने लगे।
लोगों ने कहा कि आप नौकरी मिल जाएगी। ये पता चल गया कि जितना मुझे मिलती थी सैलरी, इतने की नौकरी लोग देने के लिए तैयार हैं। हमारी माने इनडायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह भी हो गई। लेकिन फिर मैंने सत्या जी से पूछा, सत्या जी क्या करना चाहिए? मैं रिटायर कर गया हूँ, आपकी तरह मुझमें वो क्षमता नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन क्या करना? बोले कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं और आपकी जो एफिशिएंसी है और आपके काम करने का जो तरीका है, आपके पास काम आएगा। आप केवल एक चीज मुझे बता दीजिए, क्या आपको रोटी की चिंता है? हम क्या, नहीं सत्या जी वो चिंता नहीं है। बोले कोई लाइबिलिटी आपने पेंडिंग रख दी है? हम क्या, नहीं सत्या जी मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बच्चों की शादियां सब तय हो गई हैं, मैंने थिंग्स आर ऑल वंडरफुल। तो अब इस समय में रिस्क क्या है? और सरकार पेंशन भी देगी कि कोई चिंता नहीं है, घर भी है, वो भी चिंता नहीं है, घर भी दिल्ली में है। तो अब क्या चिंता है? गांव में घर है, दरभंगा में घर है, दिल्ली में घर है, क्या चिंता है? तब बोले कि तब आपको काम नहीं करने की जरूरत है, आप नौकरी नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी कीजिए, काम आपके पास में दौड़ के आएगा। और ये जो उनका अनुभव था, वो रियली इट हैज प्रूव्ड वंडरफुल, एंड आई हैव रियली नॉट नोन व्हाट इज कोरोना टाइम। आई कैन ऑनेस्टली टेल among the people who are here, because our work का, बट ओल्ड वर्क जिस चीजों में हम प्रोफेशनल, और जितनी चीजों को मैं सर्विस पीरियड में नहीं जानता था, सर्विस पीरियड में हम केवल एक डिपार्टमेंट को जानते थे जिसको मैं हेड करता था, उसको छोड़ दिया तो उसकी बात नहीं करता था। लेकिन अब मुझे हर चीज का टैब रखना पड़ता है और हर चीज रेडली अवेलेबल है, हर प्रश्न के उत्तर पता है, उस पूरे डोमेन का एक्सपीरियंस हो गया। और ये सब चीजें मैंने सीखी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि कस्टमर को, क्लाइंट को वही जरूरत है, और वो मुझे सोचता है कि मैं मास्टर हूं, जबकि मैं मास्टर था नहीं। तो पढ़ा, अपने मित्रों से सीखा, और उसके बाद में उसका एक्सपर्ट बन गया। तो ऐसे ऐसे करते करते टुडे ऑलमोस्ट आई कैन से दैट मेनी डिपार्टमेंट्स I can handle, at least 10 to 15 department of government I can handle any work coming. Okay. And it's such a good experience. A journey has been wonderful. Last 6 year journey has been wonderful, I can say, which I have never accomplished during my 35 years of earlier journey. So it's a win-win for all of us. And like Mitleji, there was no risk because government of India is paying pension. Enough pension government of India is paying, so there is no issue at all. So जिंदगी बहुत ही सुंदरतम होती चली गई आगे की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई नुकसान नहीं है, अपना काम करने में कोई नुकसान नहीं है, और अपना बॉस बन के रहते हैं, अपना बॉस, और क्या है, कोई बॉस नहीं है, अपने बॉस बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए होता है, और मित्रों की मदद बहुत जरूरी है। बिना मित्रों की मदद से ये काम जो है एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों पंजाबी सक्सेसफुल है, मारवाड़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में 50 और लोग बिजनेसमैन है, तो कोई ना कोई हैंड होल्डिंग कर देता है। लेकिन आप समझिए, ब्राह्मणों को बिजनेस करना, पूरे खानदान में ले दे के आप अकेले ही काम कर रहे हैं अपना, तो आप समझिए कि कौन आपकी मदद करेगा। तो गिरने में फिर उस समय मित्र लोग जो है हैंड होल्डिंग करते हैं, और मित्र की बहुत जरूरत होती है। अगर अच्छे मित्र हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं। थैंक यू। एक्चुअली मिश्रा जी आपने बहुत अच्छा बोला, और जैसे आप मिश्रा जी ने बोला, एक्चुअली ये पहले कह रहे थे कैपेबिलिटी नहीं थी, दैट मींस रिस्क टेकिंग, बट देन ही हैज क्वालिफाइड इट कि रिस्क नहीं था। वो ऐसे होता था, जब हम सरकार में काम करते थे हमें बोला जाता था गवर्नमेंट मेक्स यू टू लिव पुअर सो दैट यू कैन डाई रिच, ये था। फिर मैंने इसे मॉडिफाई किया था आज से कोई 25 साल पहले, इस सेइंग को, गवर्नमेंट मेक्स अस टू लिव पुअर सो दैट वी कैन रिटायर रिच। अभी हम जब रिटायर होते हैं हमें 1 करोड़ के आसपास मिलता है, और पेंशन भी 1 लाख से ज्यादा पर मंथ होती है। जैसे मेरी भी उतनी है, जबकि मैं तो 22 साल पहले रिटायर हुआ था। तो मेरी वाइफ कहती है, ये तुम्हें अभी क्यों मिल रहा है ये सरकार से, तुम काम तो कर नहीं रहे हो। मैंने कहा, मतलब भाग्यवती, जब मैं सरकार में था तब भी काम नहीं कर रहा था, तब दुगना मिलता था, तो इसलिए अब आधा भी मिल रहा है, तो मतलब
सरकार का मतलब है कि काम करने की जरूरत ही नहीं, तो देन शी गॉट सेटिस्फाइड। इतनी बड़ी चीज है सरकारी नौकरी के पीछे, इसीलिए हम भागते हैं। और जैसे मिश्रा जी जहाँ से आते हैं बिहार के, वहां तो एम होता है मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, सरकार में जाऊं, चाहे मैं क्लर्क ही बन जाऊं। मैंने एक बंदा मेरा एमटेक, तो वो मेरे यहाँ एक इंटर्न आया, तो वो प्रिपेयर कर रहा था एलडीसी एग्जाम फॉर एसएससी इन गवर्नमेंट। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? कहते साहब मैंने आईएएस के लिए ट्राई किया, 4 साल नहीं हुआ, बट मेरी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट में जॉब करना, तो मैं एलडीसी में जाऊंगा। और वो मेरे अंडर काम करता रहा और उसका हो गया एलडीसी में। तो उसको मैंने कहा तुम जाओगे? कहते हैं हाँ साहब मेरा तो ये एम्बिशन था। मैंने कहा वहाँ कितने पैसे मिलेंगे? इतने मिलेंगे। मैंने कहा आई विल गिव यू डबल देन दैट। और कहते नहीं साहब फिर भी श्योरिटी क्या है? मैंने कहा श्योरिटी है कि तुम मतलब मेरे साथ काम कर रहे हो। कहते ठीक है साहब, आप अगर अपने साथ मुझे रखोगे फिर मुझे डबल भी नहीं चाहिए तनख्वाह, देन आई विल वर्क इन हाफ द सैलरी। तो जितनी उसे सरकार से मिल रही थी हाफ में शुरू की, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू लर्न फ्रॉम मी। और अब उसकी सैलरी जितनी उसे सरकार से मिलनी थी 5 गुना ऑलरेडी हो गई है ऑलरेडी। और अब भी वो जॉब छोड़ के और कहीं जाने के चक्कर में है सैलरी बढ़ने के लिए। तो मतलब दैट इज हाउ इट हैपेंस एक्चुअली सरकारी जॉब। और मिश्रा जी का भी यही था। और मेन था कि इन्होंने जो यूज किया, जो मैंने इनको कहा द पावर ऑफ नेटवर्किंग, जो पारितोष जी भी हमें सिखाते थे वो थे उसी प्रिंसिपल। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, जैसे कह रहे मिनिस्ट्री में इनके 500 चेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्रेटरीज है। एंड कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं जिसमें इनका चेला नहीं हो। एंड दैट इज हिज पावर एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई ही इज सक्सेसफुल। That only I defined that friends, they, because I have done good for them and they are now anytime ready to pay it back to me. Anything I tell them, so they are ready. Yes. Anyway, thank और you. Atul ji, you have to give मिश्रा me जी 5 आपने जो minutes. मित्र बोला, हाँ हाँ जो आपने मित्र बोला ना, मित्र की जगह जो चाहिए आपको वो चाहिए होता मेंटर। उसको मेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में। और मेंटर अगर जैसे आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, ये दोनों होने के बाद भी, या एक कम से कम होने के बाद आपको एक चाहिए मेंटर, जिसको आप मित्र कह रहे हो, वो मेंटर होता है एक्चुअली, वो गाइडेंस जो करता है। तो वो बड़ा जरूरी हो गया आजकल मेंटर। तो जैसे हम लोग, आई हैव ऑफर्ड टू बी ए मेंटर एज, इनको अतुल जी को भी मैंने बोला था कि दैट इज माय ऑफर। तो वो मेंटर भी जरूरी है। आज की दुनिया में आप पे दोनों चीज हो तो भी आप सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, सक्सेसफुल हो जाओगे। सो मेंटर इज द थर्ड थिंग, थर्ड रिक्वायरमेंट। Atul ji, you have given me 5 minutes time for the explaining how is the North Bihar flood coming. So whenever you will be giving me okay, I will just try to explain in simple words. बिल्कुल, अभी हम 2-3 एंटरप्रेन्योर्स और बात कर लें, उसके एकदम लास्ट में, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट लास्ट, उसके बाद हम पानी का इंतजार करेंगे। राइट। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बचे हैं अभी? धर्मिष्ठा। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। तो आज का विषय ये है कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, अभी तक कहाँ पहुंचे और इसके आगे का क्या प्लान है? हाँ, मैं सबकी कहानियां सुन रही हूँ। हाँ जी। सो एक्सेलेंट लर्निंग। जैसे किसी ने तो शेयर किया, रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए बहुत था। वी ऑलरेडी वर ब्लेस्ड इन अबंडेंस, बट जॉब फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टू our own entrepreneurship was basically a transition out of no choice, because actually घर पे accident हुआ था, mother-in-law is on bed since then, and we lost our father-in-law and all that, you know. So chaos creates creation. I had to overnight lose, give up my job, where at that time I was earning to the tune of minimum 1. So I'm talking about way back in 2012. So just 3 years of marriage, and Joy being 3 years, I had to let go an overnight decision of transiting to entrepreneurship. But as they say, chaos creates creation. In this chaos, it gave birth to a couple of upgradations as far as qualifications are concerned. US degrees is what I took.
today where I stand, I think irrespective of whether I earn a lakh or two or less or more, all of y'all have already shared your stories. It's been something जो मैं अपने लिए कर रही हूँ. At the same time, I'm bringing a change to the lives of the people around me. जब job था, yes, I was working for the growth of ICICI Prudential. Overnight, in about a fortnight, I realized, Dharmishta, now you have to create something where you are growing the lives of others who are dependent on your revenue as salary. So for them, it could be a salary. For you, you have to ensure that they are growing not only financially, but other ways. So a beautiful journey. Last 17 years, 14 years, sorry. Job to entrepreneurship is 14 years. Thanks for getting me present to this journey. In short, blessed and abundance as always. All right. आप लोग ने जो काफी सारी stories मैंने सुनी, I was getting present to my content of financial freedom when I talk to business people. There are some people who always keep asking us, job से business करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So आप लोग की journey के lesson से, I think we have also got a good insight as to what does one think after n number of years being in business, then to job, or being in job once upon a time and transiting to entrepreneurship. So thank you, and a very good meeting of agenda. और Yeah, बता रही हूँ. so Thank as you said, madam, I will just like to have one comment, and Madam Dharmishta, आपने बहुत ही बढ़िया बताया, और आपने जो एक सेंटेंस यूज किया, chaos creates creation, तो मुझे भी उसका, मेरे बहुत से बैजल साहब, उन्होंने मुझे वो कहते थे chaos creates order, तो मेरे कहते थे गुप्ता जी, अगर ऑर्डर लाना है ना, पहले कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करो, कुछ कैओस क्रिएट करो, कोई ऐसा बम डालो ताकि सारा मिनिस्ट्री सब दुखी हो जाएं, और तभी तुम्हारी वैल्यू बनेगी, तभी तुम ऑर्डर लाओगे. तो आपने भी यही बोला. तो आई जस्ट वांटेड टू से दैट. हाँ, क्योंकि ये जब एक्सीडेंट हुआ तो इतना बड़ा फिजिकल इमोशनल trauma tha, because even Jay was just 3 years and he was very attached to my father-in-law. So that is why I said, long story short, इतना chaos था कि हमें खुद को पता नहीं था कि क्या हो रहा है. And then when I gave my resignation, even people were shocked, because जिस कंपनी ने मुझे 11 महीने की maternity leave दी है, उनको इतना नहीं लगा कि यार ऐसे क्या हो गया. So you know, I'm sure everybody in a job knows कि कुछ political हुआ है, ये वो, and I'm like, no, I'm away from everything. कुछ नहीं हुआ है. It is only family first that I always give. और फिर तो yes, mind strong था, so no blaming, no wronging another person, no blaming the situation. बस अपना choice था, मैंने decision लिया है, so why blame somebody else? phenomenal. So that's it from me. Any questions? Any comments? अरे questions आ जाओ भाई. अतुल ने बोला था questions नहीं आते हैं मतलब बम्पर गया है, questions आते हैं तो content थोड़ा अच्छा था. तो yes, chaos creates creation, ये मुझे परितोष से तो definitely सीखा ही है, but I experienced it long ago. My dad has donated his kidney to mummy, so I was the only one taking care of them. Yeah, responsibility नहीं लेते तो आज mother-in-law की ध्यान इतने अच्छे से नहीं रख सकते. I have one question for you. Yes, sir. Yeah. The question is that ki, जैसे आप you was working in ICICI Prudential. Now you are doing the financial freedom, whole thing like insurance, mutual fund, etc. Everything. Okay. So how do you find the difference? Because both are the almost same thing. आप वहाँ पर किसी कंपनी के behalf पर किसी का wealth manage कर रहे थे. Now you are individually you are managing the wealth or you are giving the suggestion. How you feel difference between two roles? वहां पे मेरा restricted growth था क्योंकि मैं सिर्फ इंश्योरेंस की बात करती थी और वो भी I was married only to ICICI Prudential. Right? Here
It's like after marriage, I am married to the whole family, each and every member. So that's the difference. See, what you are, see, I understand where you are coming from because my husband is a CA. So I know where you are coming from. I get that. As I said, there I was restricted in the growth of people's money, you know. Once I transited, they were the ones who made me grow. अरे धर्मिष्ठा म्यूचुअल फंड करना है यार, कहीं और क्यों जाना, आप ही करवा दो. विल बनाना है यार, लॉयर के पास कौन जाएगा, आप ही करवा दो कुछ ना कुछ. तो इन हाउस लॉयर था, मुझे पता चला देयर इज अ शॉर्ट कोर्स आई कैन टेक बिजनेस फॉर विल्स, तो मैंने ले लिया. तो ट्रस्ट मी, इवन ऑन this last Friday that I was talking to my client, right, about my son getting the education for Podar College, he was the one who was hand holdings to me. So every time there is any chaos in our life or any ambiguity, we go back to our client. So our business, our relation with our client is not only transactional. It is a lot more. धर्मिष्ठा को कंसर्न है, किसी को जाके बात करो. उन्होंने मुझे एक ही लाइन दी, धर्मिष्ठा ₹1 एक्स्ट्रा मत देना, एडमिशन ऐसे ही मिल जाएगा. और मैं तो प्रिंसिपल के कैबिन तक जाके आई थी पोदार कॉलेज में. दे टोल्ड मी टू गिव एन एप्लीकेशन, मैंने दे दिया. बोला इतना डेयरिंग किसी का होता थोड़ी है. सो इन शॉर्ट, एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन ट्रिमेंडसली बिकॉज ऑल आई नो इज ओनस मेरे ऊपर था ना, तो मुझे पता था मेरे को आई हैव टू टेक माई सेल्फ टू द हाइएस्ट बेस्ट. नाउ माई एफर्मेशन ऑलवेज हैज बीन, please take me to the highest best. Please take me to the highest best. Awesome. Anybody else? That's it. Thank you for hearing me out. Pleasure is all ours. धर्मिष्ठा जी के पास संभावना ये है कि ढेर सारे जो हाउस वाइफ्स हैं ना, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने का, और वो ऑलरेडी वो कर रही हैं जो मुझे लगता है. और ये इन हम लोगों की संभावना से कहीं ज्यादा उनका है. अगर हाउस वाइफ को मजबूत कर दे, उनको 10,000 रुपये की महीने की इनकम हो गया ना, तो कितने सारे घर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. ये साफ साफ दिखता है. हाउस वाइफ का मजबूत होना मतलब पूरा घर मजबूत होना. Absolutely. Testimony सुनेंगे तो. For me, if I was to die tomorrow, right? परितोष कई बार ये इंस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं, और मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि भाई, if I have to die tomorrow, I know I have not left anything incomplete, whether for myself, whether for my family, whether it's for my community, a thanksgiving to the universe. I'm ready even now. Yeah, Dharmishta ji, that is called putting everything on the autopilot mode, जो आजकल सबका ऑब्जेक्टिव है. फाइनेंशियल फ्रीडम का भी, तो आप तो हर चीज की फ्रीडम हो, उसको तो निर्वाणा बोला जाता है, निर्वाणा. मेरी कम्युनिटी भी चलेगी मेरे बगैर. आई एम टेलिंग यू, यू विल सी दैट, बिकॉज वो मेरी कम्युनिटी नहीं है, उनकी कम्युनिटी नहीं है, ये हम सबकी कम्युनिटी है. सो उन लोग को खुद को पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो लोग अपने आप चलाते हैं. सो इवन धर्मिष्ठा इज नॉट एक्टिव फॉर 48 और इवन 100 आवर्स. कम्युनिटी अपने आप चल रही है. आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है सर, ऑटो मोड है. Awesome. नवीन, अभी तो मैं सही बताऊं, बहुत अच्छे इनपुट्स को कॉपी टाइप कर रहा हूँ बैठ के आज. तो जैसे मुझे मैडम से दो सेंटेंस बहुत अच्छे मिले. आई एम गोइंग टुवर्ड माय हाईएस्ट, एंड द सेकंड थिंग दैट शी हैज गिवन दैट अ chaos create the creation. Yes. I'll share those information in the. और जो आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि आप लेगेसी भी क्रिएट किया, और आपने वो इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जहां आपके बगैर भी आपकी कम्युनिटी चल रही है, बिकॉज आपने एक मैसेज क्रिएट किया दैट यू हैव अलाइंड योरसेल्फ विद योर ट्रू वैल्यू सिस्टम. थैंक यू मैम. Received all comments. Thank you so much. Blessed indeed. Thank you. Thank you, Atul. welcome. Yeah. Naveen, you want to share? You're सर about to step. हाँ जी. सर आज का फायदा मेरे को इस मीटिंग में आके ये हुआ कि आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, एज यू नो, आई एम फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम ऑन द पाथवे कि हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड. नाउ आई हैव गेट द क्लैरिटी, एंड आई एम क्वाइट थिंकिंग दैट आई एम. संजय सर तो मेरे ऑफिस के पास में ही है, मनीष सर, सॉरी,
तो मैं एक बार इनसे अपनी जो मतलब पूरी रिस्क एपेटाइट को हैंडल करने की वो भी एक बार पूछूंगा कि सर कैसे लेके जाऊं, ताकि जैसे आज सत्य सर ने कहा ना कि मिनिमम एक्सपेंडिचर को मैनेज कर, जो घर का खर्चा है देखो पूरा प्लानिंग हो जाएगा तो दैट आई कैन फुल फ्लैज्ड एंटर इनटू माय बिजनेस आल्सो, देन आप है ना गाइड करने के लिए, अब तो फैमिली बन गई ना। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। इवन मिथिलेश जी आपके पास में ही है, वो नेहरू प्लेस में ही है। ओह थैंक यू सर। या ऑलराइट, राजेश जी, डू यू थिंक यू आर इन अ पोजीशन टू स्पीक अ कपल ऑफ सेंटेंसेस? वो बहुत जरूरी है अतुल जी, एक्चुअली सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर क्रिएटर तो राजेश जी हैं अपने में। हाँ, अतुल थोड़ी हिम्मत कम है बिकॉज रात भर पेट गड़बड़ रहा। कोई बात नहीं, तो जितना ये बोल रहे हो उतना कि एक सेंटेंस बोल दो फिर जाओ। तो मैंने तभी वीडियो नहीं ऑन करा बिकॉज आई एम ऑन माय बेड। Yeah, that's fine. Recover. Yeah. Yeah. So wish you speedy recovery. Yeah, thank you. You see, the time I remember, when we got married, I told my wife कि मैं कभी business अपना करूँगा. And then I used to get into my comfort zone of my job. But she used to keep reminding me कि you had said this. Now, see, unlike a government job, where for life you will keep getting a pension, and therefore frankly the risk taking capability nahi hoti hai, because there is something which you have to continuously aapke aata rahega. I remember the day I quit, I was at a position where I had a chauffeur driven car. So I just quit one day, and the next day I started traveling in buses, with no guilt for myself कि अब बस में जा रहा हूँ. I remember when I used to go on a tour, मैंने भी क्या करा, I figured out one thing. One of my friend told me कि राजेश, अगर 6 महीने में if you can succeed in your business, which I'm sure he said you will, otherwise you can get back to a job. कोई भी तेरे को लेने को ready होगा. So what I did first is I had created sufficient balance that my family should not suffer. मैं सफर कर लूं कि मैं बस में चला जाऊं, from a chauffeur driven car to traveling in a bus, a DTC bus. For 1 year I didn't even buy a car, and when I used to travel in a train, I used to travel in a normal second class. जब tour पे जाता था, from an AC I came down to a second class. But जब मैं tour पे जाता था, I used to say कि okay, I'm working for a business which might take 1 year. But what I used to do in every trip, I used to create sufficient business because I had created a basket of companies whom I was associated with. कुछ यूरोप की थी, कुछ इंडिया की थी, एक चेन्नई का था, वो छोटी सी कंपनी थी. Used to make material handling systems, जो सब कुछ ये होता था. And he used to give me a 10% commission. तो I used to plan a trip कि इस ट्रिप में एक आध उस प्रोडक्ट का ऑर्डर तो ले आऊं कि मेरा ट्रिप की कॉस्ट निकल आए, कि ये जेब से ना जाना पड़े. So every trip used to be a creation towards getting a larger business, but वो चिल्लर में हर एक ट्रिप में जनरेट करता था, because I knew that jingling had to continue to happen. And I mean, then there was frankly no looking back, because 6 months went off to God knows, I think 20 years now. And I never had to look back because there was the confidence in self. And today, of course, what I'm actually doing is I read a Facebook story about 2 years ago on a book called Die Empty by Todd Henry.
And I think all of you might have heard that. Uh, but it's, is that professor which asked the students which is the richest place on this planet, and somebody said the Middle East, somebody said Africa, where diamond mining is there, and he said no, it is the crematorium, where a lot of people have gone away with their wisdom. So today I have formed a platform where have with me, some selected experts from the industry, air conditioning experts, automation and control experts. There's a gentleman who's from the Navy, uh, retired commander from the Navy. A beautiful teacher he is. And I have taken all of them on, and I look for business. I take upfront the responsibility, but I share the revenue with them. Not that they need money. For example, this commander from the army must be getting a fat amount of pension, but he has a passion to teach. So I give him the platform. Right now, we are consultant to a company in Gurgaon, where we go every Saturday. Tomorrow is my day there. So we are upskilling the youngsters, uh, to take them to the next level. And when I was starting this process, I spoke to the MD of the company. I said, देख बॉस, एक इसमें रिस्क है कि मैं इन लोगों को अगर इनकी कैपेबिलिटी के साथ कनेक्ट कर दूं, you might find some of them might give up their job in this company unless you can make this job itself so challenging that they stay back. तो I said मैं उनकी inner power से उनको connect करा रहा हूँ. So I am doing technical sessions. We are also doing soft skills, where my 45 years of corporate experience I am sharing with them, things which I've accomplished in life, how I accomplished in life. And I'm sure each one of these things, these people also have experienced in life, but they often think कि शायद ये चांस था कि या दूसरे का मूड अच्छा था इसलिए चीज हो गई, but they don't acknowledge their own strength. So alternate Saturdays I do kind of soft skills of empowerment sessions on building good human beings, and getting them in touch with their own power. तो ये उसके जो ओनर है कंपनी को, इसे सर चिंता नहीं कीजिए, आप इनको अपस्किल कीजिए, इनको अच्छा इंसान बनाइए, and I'm sure I will create enough opportunity for them to stick around here. I will create a bigger platform or a bigger canvas for them to paint on. तो ये शुरू में ही उससे मैंने बात कर ली, तो he's given me the full go ahead कि work passionately with my team. So it's a great experience. They are all people in mid 20s, early 30s, and I'm enjoying working with them and unko taking them to their next level. So and a lot of people who are with me are currently retired, mostly from the private sector, one from the government, and they're enjoying working too. तो वो डाईएमटी वाला उनको जब मैंने सुनाया तो वो टिक कर गए, उन्हें कहते नहीं यार, अब तो हम पूरा उड़ेल के ही जाएंगे. We will give away all that we have, and then only we'll hit the crematorium. So like Dharmishta said, I am ready now. In my life also, I've contributed to a lot of people. And one great acknowledgement I always get is from Sukhdeepak. Sukhdeepak is today a fantastic trainer, fantastic coach. But वो often अपने sessions में कहता है कि इस path पे मुझे राजेश ने डाला. So I discovered him in a hotel in Chandigarh, and I enrolled him into a program which had changed my life, and that's something which changed his life too. And वो acknowledge करता है, and today I learn a lot from him. One thing which I do remember I learned
in these last 2 years on e-growth. And Atul, thanks for persisting on that. I remember once in the, I think it was what, 1.5 साल पहले था, when there was that CEO talks going on. So you said, Rajesh, why don't you give a CEO talk? तो मैंने कहा यार यहाँ तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, मैं तो टेक्निकल टॉक दे सकता हूँ, तो यहाँ तो किसी को समझ नहीं आएगी. So I remember I said no to you and I put the phone down. And I had recently done a program called Train the Trainer. I've been a trainer all my life, but at a professional level, I had never trained people. You know, coaching people. Companies में तो करता ही था, is to groom people. A lot of people today who are MDs of companies whom I coached and groomed. And but professionally to take on programs, कभी मैंने करे नहीं थे. So you persisted, and I remember that first session on the CEO talks, power from within, and I think it was one of the bestseller programs we had. We had about Absolutely. 70 people. We Yeah. had about 70 people, and I got so much of acknowledgement from people who I have known for donkey's years. So when they shared things, they shared with me. And I remember there was this Hemant Makwana, when you asked that question, how much do you love Rajesh? So Hemant is the owner of a company, a Japanese company. And he says, I love Rajesh 9 out of 10. So you asked him why. So he says, because Rajesh always beats me at negotiation. He was the buyer and I used to be the seller some years ago. So he always used to feel that I had the upper hand. मैंने better deal ले ली और he probably couldn't get the best out of me. So, I got connect with a lot of people, a lot of people who showered their love, and that's something which gave me the energy to continue, keep propelling forward. So thanks for that. And after that, I did one for a college also, IALM. And then, of course, I'm doing it every alternate Saturday. So it's been a great journey. Thank you. Awesome. Anybody else would like to ask, comment, share something on this? Yeah, Atul ji, and thank you, Rajesh ji. Despite of your best, not good health, you still gave us what we needed, and that is the spirit and passion you have for the entrepreneurship. You are fit to become a coach, public mentor for any budding entrepreneur, which you have already shown the examples. And if you have created a fellow of the stature of our Sukhdeepak ji, then we need all to be mentored by you actually. And I will propose to Atul ji that we should start in the e-growth. In fact, all other activities of e-growth we can suspend or have a moratorium, except mentoring and coaching for the budding entrepreneurs. If one focus agenda actually, and that can, according to me, turn around the fate of e-growth. So with that, I really want to compliment you, Rajesh. Thank you. Thank Great you, Satya words, ji. yeah. Anybody else? All right. So thank you all. So this has been an awesome session, one of the best spent times in my life. So as Dharmishta said, chaos creates creation. Today we started this session and I really did not know what are we going to create today. It is supposed to be an inner circle wherein we have a create session. And I think as a community, we've created much more than what we would have created with a normal create session.
And this happened out of chaos. One thing that I have discovered about myself is that I don't get fluttered in an unknown territory. So I've come across people who really get uncomfortable if things are not in order. Means if the person is supposed to go to the airport, he will take 3 hours in advance so that he's there in time. He'll check 4 times whether he's got his ticket in place, whether he's packed his stuff well, all that stuff. I think I'm blessed that I don't get unnerved by these kind of things. Same was the thing today. I thought, what is the purpose of meeting? The purpose is to contribute to the business owners. Man, out of thin air, no agenda, started with this conversation. I think in these are conversations which would have not happened in the normal scenario. Had we put an agenda together, none of us would have spoken, and none of us would have spoken what we spoke today, which I think is phenomenal. This is called storytelling. And that is my biggest takeaway today, that each one of us needs to become a better storyteller so that we die empty. So that in case of chaos, we are able to create something. So yesterday I was on a session, and while on the session, the speaker, he had a power cut at his place. So he went off air. Now at that point in time, somebody needed to jump in to engage the audience till the time the speaker came back. And I started doing that piece over there. In that process, we were able to keep the community together. I think that is something which is what keeps me excited or keeps me going personally. That is what I've been doing all this while, whether I've been working for somebody or working for myself, or the idea of creating e-growth. And what Satyaji just said, that just one piece, which is empowering the new entrepreneurs or the young entrepreneurs. So I would think everybody is a young entrepreneur. So even today, Rajesh ji is a young entrepreneur, because what he's going to do tomorrow, he has not done it till today. 1.5 years back, when he delivered that first lecture, he had not done that before that. And after that, in the past so many months, he's done it so many times. So maybe he has discovered a new Rajesh. And it's an honor to have nudged him to discover a new Rajesh. I think that is something which I cherish. So thank you all for being around. Thank you for listening to me. Thank you for allowing me to be myself. And a bigger thing, a big thank you to you for being yourself rather than being somebody else. All right. Anything else somebody would like to share, comment? Yeah, Atulji, very good. Actually, let me compliment you for all this and conducting this so well without an agenda. And that is what the chaos brings order, actually, the philosophy that Mr. Ji mentioned. And I also swear by that because of my ex-boss, Mr. Pradeep Bajal. And of course, you have really mentioned 2-3 ideas which comes immediately to me, and treating it as a, let us say, resolution on entrepreneurship week, that the storytelling actually, and that has to be really taken seriously, and it can be very powerful. It, in fact, it can alone be a survival medicine for the e-growth, which, as all of us know, is struggling. And I have two just ideas which come to my mind. One is the My Story author,
Sharda Sharma. Incidentally, she is also from Bihar, though she is based in Bangalore. Sharda Sharma, my story, I keep attending, I have spoken also there, is something unique. And so we should do some learning from there, from my story channel of Sharda Sharma. The second thing is somehow, which I had hinted earlier also once, we have to make all our such presentation stories, talks in a format like TED Talk. That's all. So your e-growth should create some more, let us say, brand or property with a difference, some USP of TED Talk. If these two things we can club together, and main focus again to mentoring the entrepreneurs ongoing or who are on the border, who need a trigger, means prospective, upcoming, and existing failed entrepreneurs, successful entrepreneurs, entrepreneurs who have become unicorn, because India is now tipped as the land of unicorn. It will not be Silicon Valley now. Now it will be India. And that is what Prime Minister himself mentioned on Independence Day also. So all these So things. India is not a land of snake charmers anymore. India is a land of unicorns, is it? Yes, yeah, exactly. So that is what I think we have a role to play there. And e-growth have a opportunity as well as capability. What is needed is the drive or the vision. Maybe we have to re-articulate our vision. We have to restate our vision. And that will be basically a order after the chaos. So I will, let me be frank, today I will feel we are at the right stage of going into the order or creating the creation at e-growth. We are in the chaotic mode. So let's start from there. Absolutely. Awesome. So on this note, I must also share a couple of things. All right. Past couple of weeks or maybe a few months, I had been operating from survival. And that is why every time we had a conversation, it was revolving around the survival of e-growth. All right. I must announce to each one of you that I am beyond survival now. जैसे मिथिलेश जी ने कहा ना कि जी अगर मुझे वापस नौकरी करनी हो तो 50,000 की नौकरी तो कोई भी दे देगा, तो आज मैं वो नौकरी ऑलरेडी पा चुका हूं. Right? And I think there is no reason to kill or to deal with e-growth in a manner in which it does not deserve. All right. So we're willing to nurture e-growth beyond money. And I think it is worth the time spent to mentor upcoming, failed, not so failed, future, dead, alive entrepreneurs. All right. We have been doing that in Rajesh ji's story. We got that a person who was a hardcore engineer who could talk only technical, he has become he's always been a human being, but he started talking human stories. And right now, in the past 1.5 years, now he is actually contributing that to other organizations. I think that's a great success story for us. And we will build on it. We already have one platform, which is Expert Talks. We have another platform, which is the Inner Circle. We'll build some more. We'll see if it can pay for itself, great. If it cannot pay for itself, even then we will build on it. All right. Thank you. Anybody else would like to say something? तो जो सत्या जी ने बोला और आप बोल रहे हैं ना, मुझे भी लग रहा है कि आज के बाद से शायद ई ग्रोथ
कुछ नई दिशा पकड़े और बेहतर दिशा पकड़े। बहुत बढ़िया। क्योंकि ना जो फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर था, जो आपने अनाउंस कर दिया, वो अगर खत्म हो गया तो अब क्रिएशन ज्यादा होगा। Fantastic. Yes. Anybody else? Sir, we are with you. Thank you. Anybody else? और कुछ? अतुल जी, मिश्रा सर का अभी बाकी है? बिल्कुल बाकी है। अभी बस पानी आने वाला है। ठीक है जी। मुझे लॉग ऑफ करना पड़ेगा। मेरा एक दूसरा सेशन आधे घंटे में शुरू होना है, उससे पहले आधे घंटे में होना ना? शेव करनी और नहाना भी है एक्चुअली, बिकॉज़ इट विल शेव कर लीजिएगा, नहाए कि नहीं नहाए वो किसी को खुशबू नहीं आएगी। We will have that one in some informal session. Let us wind up today. It's already 9:30 going to be. So next time, it is not that. Today the session was a very thoughtful and learning type. So let us grasp whatever we have learned today. So let us try to recapitulate in our own self and try to find out what is the best. And not that my session was because we started with 0 and today we are abundant. So we started with 0 and end of the day we are with abundance. So why to in 0 I felt that there was an scope of telling something, but now I feel that enough to recapitulate among ourselves in and take. Awesome. Thank you. I really get that. And I must तो अब इस परिस्थिति नहीं मैं कहूँगा, we're at the cusp of a new world, right? जिस तरह वो नेहरू जी ने कहा था ना, वो आजादी at the strike of 12 midnight, right? Similarly, right now we are at the cusp of a new world, of a new universe. और मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि हम एक नए विश्व की चेतना करें, एक नए विश्व को उजागर करें, एक नए विश्व को क्रिएट करें, अनफोल्ड करें. All right? And since we're starting from chaos and we don't believe in order, let us keep on creating. ठीक है जी? ठीक है. Yes, sir. Thank you. Thanks. तो wonderful session. Yeah. आज के सेशन में सबसे बढ़िया एक सरप्राइज बताऊं क्या? बताइए. आज आपने कहा कि मेरे पास कोई एजेंडा नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे माइंडसेट के थॉट प्रोसेस चाहिए तो मुझे मिल गए. बिकॉज जैसे राजेश सर ने कहा ना कि एज ए गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद आप एक अच्छा खासा पैसा उठा रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा डर होता है कि पंगे लूं कि ना लूं. ठीक है, तो अब ये बन गया. मिश्रा जी ने भी, मिथिलेश जी ने भी कुछ आइडियाज दिए हैं, और तो मिथिलेश जी मेरे पड़ोस में ही है, नेहरू प्लेस में. तो आओ सी. Thank you everybody for your great thought and support. I am so thankful and I hope कि आगे बढ़ूं और आप सबकी सपोर्ट से एक मैजिक क्रिएट करें with the e-growth also and for the e-growth also. Absolutely. So we'll continue to build on it, and let's meet next Friday morning, next Tuesday evening. All right. Thank you. See you. Wish you all a happy Janmashtami in advance. We'll be meeting after that. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Thanks. Bye. Thank you all.